डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 21 एंड द चैप्टर नेम इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस चैप्टर में हम इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक स्टार्टर एक्टिविटी दी गई है। कॉमेडी इज नॉट अ जोक, मतलब कॉमेडी जो है वो कोई जोक नहीं है, ये करना कोई इजी काम नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो कॉमेडी के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसे रोल है जो कि कुछ ऐसे एक्टर्स है जो कि इन रोल को प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो ये है जॉनी लीवर। ठीक है, और सेकेंड इमेज में आपको पता करना है कि ये कौन है। ठीक है, ये पास्ट टाइम मूवीज में काम करते थे, कॉमेडी मूवी जो कॉमेडी मूवीज होती थी उन्हीं में वो ज्यादातर काम करते थे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हियर इज अ लिस्ट ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर आपको लिस्ट दिया है इडियम्स और फ्रेजेस का। ठीक है, कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं तो उनका आपको यहाँ पर लिस्ट दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है अ वीक पर्सन, मतलब कमजोर आदमी। ठीक है, he was accused by his opponents of being a man of straw. Now next is a wolf in sheep's clothing, a dangerous person pretending to be harmless. मतलब कि काफी खतरनाक पर्सन जो कि प्रिटेंड कर रहा है, जो कि नकल कर रहा है, मतलब कि स्टूडेंट एक काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति जो कि एक्टिंग कर रहा है कि वो हार्मलेस है। ठीक है, जबकि वो हार्मलेस नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर यूज किया गया है अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, डोंट बिलीव द पॉलिटिशियंस, दे आर वुल्फ्स इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, नेक्स्ट वन एबीसी, वेरी कॉमन नॉलेज। एबीसी मतलब बहुत ही कॉमन नॉलेज। ही डजंट नो द एबीसी ऑफ फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन एंड अगेन, मतलब कि रिपीटेडली, मतलब बार बार करते जाना। वन हु ट्राइज अगेन एंड अगेन गेट्स सक्सेस इन द एंड। नाउ नेक्स्ट इज ऑल इन ऑल, मतलब कि ऑन दी होल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इन ऑल द एक्सकर्शन वाज अ प्लेजेंट वन। नाउ नेक्स्ट इज एट सिक्सेस एंड सेवंस, पर्सन्स हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, मतलब वो लोग जिनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। आई डोंट वांट टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन विद यू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बैग एंड बैगेज विद ऑल गुड्स, he returned to his village with bag and baggage. Now next is black and white in writing. Okay, it is always better to be informed of everything in black and white, मतलब कि written form में. Now next is body and soul, यानी कि entirely. She devoted her body and soul to win the prize. Now next one is by hook or by crook, यानी कि by any means, किसी भी तरीके से, he wants to win this match by hook or by crook. Now next one, by leaps and bounds, speedily, the population is increasing by leaps and bounds. Now next one, cats and dogs, heavy rain. Okay, cats and dogs का मतलब है बहुत ही ज्यादा बारिश होना। ठीक है, it has been raining cats and dogs for the last 3 hours. Now next one, cock and bull story, मतलब कि untrue story, मतलब जो सच्ची स्टोरी नहीं होती है। All his excuses seem a cock and bull story. Now next one is fair and square, यानी कि honest रहना। We won the match fair and square. Now next one is far and wide, यानी कि everywhere, हर जगह। Many tourists come to see the Taj from far and wide महल. Now next one is first and foremost, यानी कि highest priority में जो चीज होती है। To be honest and accountable are the first and foremost requirements of a good employee. Okay. Now next one is hard and fast, यानी कि certain. There are no hard and fast rules to sanction loans in banks. Now next one is heart and soul, यानी कि full devotion. He sang with his heart and soul. Now next one is hither and thither, यानी कि here and there. She refuses. The refugees ran hither and thither in search of safety. ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पर द होगा, टी आएगा। Okay, now next one is hue and cry, great noise. The workers raised a great hue and cry against the new rule.
Now next one is ins and outs यानी कि full detail. Before starting a new business, you must know the ins and outs of it. Now next is kith and kin यानी कि blood relatives. All my kith and kin were invited to the marriage of my daughter. Now next one, lock and key in safe place. She keeps her jewelry under lock and key यानी कि safe place में. Now next one, might and main with all enthusiasm. If you study with might and main, you will surely pass. Now next one is milk and water, weak. The foreign policy of Sri Lanka is a milk and water policy, यानी कि कमजोर policy. ठीक है. Next one is nook and corner, मतलब कि everywhere. ठीक है. He searched for her in every nook and corner of the street. Now next one is now and then, occasionally. I visit the church now and then. Now next one is null and void, of no use without force of application. The law passed by the legislature was declared null and void by the Supreme Court. Okay. Now next is once and again, यानी कि repeatedly. I have told you once and again that I have no money to purchase that car now. Okay. Now next one is once Ashley's Hill, a weak point यानी कि बहुत ही कमजोर point. The corrupt minister was the new government's Ashley's Hill. Okay. Now next one is out and out completely. Mahatma Gandhi was an out and out great leader. Now next one is over and above यानी कि besides. I paid him rupees 50,000 over and above what he had demanded. Okay. Now next is pros and cons यानी कि merit and demerits. Before signing this agreement, you must understand all the pros and cons well. Okay. Now next one is safe and sound यानी कि quite well. She reached home safe and sound. Now next one is sum and substance यानी कि the actual theme. Courage in the face of extreme hardening was of the issues concerned, the sum and substance of the film. Now next one is thick and thin in all circumstances. I shall support you through thick and thin because you are my friend. Now next is time and tide यानी कि course of time. Time and tide wait for none. Now next is tooth and nail with all force. He has sworn that he will fight tooth and nail for the custody of the child. Now next is ups and downs यानी कि prosperity and adversity. My mother has been my greatest support through the ups and downs. Okay, through the ups and downs in my life. I hope student कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इन idioms को अच्छे से याद करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Students take care. Bye.